Okay, hello everyone. This is actually metals chapter. One very important chapter we have in O level and IGCSE. Acha, now before I start off, I must tell you that I'll share a link on my Facebook page, right? Please download it. Why? Because it has some very important questions. It's actually both for O level and IGCSE. The questions are actually from IGCSE, but then they're very important questions, equally important for O level. We have some questions from various chapters, right? And it has mark scheme along with it that is officially generated by Cambridge. So it has no third party intervention, first of all. और क्या कहते हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जब कर लें जब लिख लें क्वेश्चंस तो डू टैली विद द आंसर्स गिवन राइट and it's actually like officially by Cambridge. It's not our production. So let's get back to the chapter. It's metals, right? देखिए, since I think earlier levels you've been learning that in this region we have all metals, and in this region we have all non-metals. Is that so? And among the metals, we can say that these are actually transition metals we talk about. Is that so? Generally, what is actually a metal? तो metal होता क्या है? Which can oxidize and form positive ions. So metals oxidize and form positive ions. कि metal electron lose करते हैं. And I think in case of non-metals, so we can say they reduce and form negative ions. That's so. So basically, when we talk about metals, तो एक चीज़ जो एकदम ब्रेन में क्लिक करती है दैट इज कि दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि वी हैव अ नॉन मेटल एज वेल विच इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट्स कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्राफाइट सो ये मेटल्स की डेफिनेशन नहीं बन सकती कि वो कंडक्टर्स होते हैं राइट बिकॉज वी हैव नॉन मेटल एज वेल अदरवाइज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वे एंड देन आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से याद तो होगा एक बात लेकिन स्टिल आई रिपीट इट एंड दैट इज ये down the group, we always say कि reactivity of metals increases. And across the period, I hope you remember कि reactivity of metals decreases. This chapter is more focused on metals, so I'll be talking about metals only. Okay, I hope you remember from prior table chapter that first group metals are the most reactive metals we have. Now, once you know all these things, so we can start learning about the properties of metals. Okay? So, let's get ready. So, let's see properties of metals. I think like very famous property of metals that they are good electrical conductors. So we can say they are electrical conductors. By the way, thermal conductor as well. And the reason is because they have free and delocalized electrons. ये एक बात याद रखें वैसे भी I think कि the physical property of any substance is determined by the way its particles are arranged or packed, isn't it? Like in case of ionic compounds, right? We say the ions are regularly packed, so it's a crystal lattice. I think in case of like say a covalent compound, we can think simple molecules are held by weak intermolecular force of attraction. Like in case of metals, we can say that okay, the positive ions are packed extremely tightly in layers and are held together by strong metallic bonds, isn't it? क्योंकि आई होप यू रिमेंबर वैसे बाय द वे ऑन द साइड आई होप आपको याद होगा अर्लियर पार्ट से कि ये होता है मेटल का स्ट्रक्चर इट्स पॉजिटिव आइंस दे आर ऑल पॉजिटिव आइंस and they're all surrounded
by sea of free and delocalized electrons, right? तो कितने रेगुलरली पैक्ड है, giant lattice structure होता है इसका भी. So normally we say that metals are good conductors of electricity. Why? Because they have free electrons. If I apply potential difference across a metal, the electrons start moving, and metals are good conductors of electricity. Second, they usually have high melting points. So metals usually have high melting point. हाँ जरा ग्रुप 1 छोड़ दें, वो लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन वाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, यू कैन से, राइट. तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स. You can also say that they usually have high densities. Metals usually have high density. But please, I mean not group 1, it's low density metals. Reason is again strong metallic bonds. जरी बात है कि metallic bonds strong हो तो particles करीब होंगे, जितने particles करीब होंगे उतना वो dense हो जाएगा. I mean it makes sense. Now, based on the regular packing of these positive ions in the form of layers, it is actually easier for the layers to slide over each other when force is applied, and that's called as malleability. So metals are malleable and ductile. Now what is actually malleability? ये देखिए, ये पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पड़े हुए हैं. मैंने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ ये कि लेयर्स स्लाइड कर गई. जब ये लेयर स्लाइड की, राइट, तो मुझे बताएं क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे डेंट नहीं पड़ गया? इसे आप डेंट कहते हैं, राइट. इट्स कॉल्ड एज डेंट. So basically when you apply force and layers slide over each other, so it's called as malleability. So layers can slide, right? How do you go that? So we say that due to close packing of positive ions in regular layers, it is easy for the layers to slide over each other when force is applied. Isn't it? जिस तरह से I mean softness भी आ जाती है, you can say malleability भी आ जाती है. और अच्छा, ductility क्या है? कि metals can be pulled into wires. So metals malleable भी हैं और ductile भी हैं. Okay, everyone? So there are general properties of metals. वैसे एक दो बातें याद रखें. Metals oxidize करना चाहते हैं. They tend to lose electrons. It should be clear. Normally metals form oxide layers on their surface. और जब वो ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो वो उस मेटल को अनरिएक्टिव भी कर देती है, कि जब उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी तो इस बात अंदर से मेटल हाइड हो जाएगा. तो यूजली मेटल्स आर corrode in air, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम इज अ वेरी बिग एग्जांपल, व्हिच विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट इट सून. But then guys, these metals have the ability to form alloys. That's a big property of metals. What are actually alloys? Alloy is a mixture, I must tell you,
राइट. एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं. Although we say that if a metal is pure, it has many useful properties, but they're not widely used due to their softness and high reactiveness. जो नॉर्मली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, जिस वजह से आप उनको नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते. अब अगर मुझे कोई मेटल यूज़ करना है, लेट्स से ये खिड़की की ग्रिल में, तो आई कॉन्ट यूज़ आयरन प्योर, वो तो हफ्ते में डस्ट कर जाएगी. मैंने जहाज़ में अगर लगाना है आयरन, आई कॉन्ट यूज़ आयरन, इट विल रस्ट इन एयर. वो तो लाहौर से लंदन पहुँचते तो जहाज़ ही रस्ट कर जाएगा. सो इट मीन्स दैट कि जो प्योर मेटल्स, दो दे हैव मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज. अब फॉर एग्जाम्पल अब जो कॉपर वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर इज एन एक्सेलेंट नट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वी एक्चुअली प्रेफर टू यूज एब्सोल्युटली प्योर कॉपर इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टिंग वायर. बट देन इन अदर केसेस चूँकि मेटल सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से हम एलॉयज प्रेफर करते हैं. और आज if I talk about these days, the most metallic substances used nowadays are actually alloys. Alloy क्या है? An alloy is a mixture of a metal with one or few other elements. वैसे मैं आपको बात बताऊँ, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. समटाइम्स कभी कभी नॉन मेटल बीच में आ सकता है, लेट्स से कार्बन, स्टील फॉर्मेशन में आता है कार्बन. तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. अगर ये मिक्सचर है तो फिर इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. कॉमन सेंस है, इट वोंट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट. Is that so? It makes sense, right? These alloys are actually made by mixing the molten elements in the right proportions and then we allow them to solidify. अगर आपने एलॉय बनाना होता है ना, तो हम पहले मेटल्स को मेल्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर हम उसको सोलिडिफाई कर लेते हैं. Now, why actually alloys are good and why they are preferred, over pure metals? So why actually alloys are actually preferred rather pure metals? So we can go with examples. Because alloys are generally harder and stronger. So alloys are generally harder and stronger than their constituents. You know why? Because when a pure metal is alloyed, a different metal is added to the pure metal. So atoms of the added element have a different size than those of the pure metal. This breaks up the regular arrangement of the metal ions in a pure metal, making the sliding of layers actually difficult. Therefore, alloys are harder and less malleable. So can you see? Okay, alloys are generally harder and stronger than the constituents. This is because while making alloy, atoms of different elements have different sizes. This breaks up the regular arrangement of atoms in the pure metal, making sliding of layers difficult. Therefore, alloys are harder and less malleable. क्योंकि जब साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई ही फ़र्क हो जाएंगे तो लेयर्स स्लाइड नहीं करेंगी. अभी लाइक यू कैन सी हेयर एज वेल. आप लिखते भी रहें और यहाँ भी देखते रहें. नॉर्मल मेटल क्या होता है? मेटल नॉर्मली ऐसे होता है. नो, दैट्स अ नॉर्मल मेटल, दैट्स अ प्योर मेटल. अब एलॉय क्या होगा? अब ये डिफरेंट साइज है. अब तो लेयर स्लाइड नहीं कर सकती ना. अब लेयर स्लाइड नहीं करेगी तो हार्डर ही होगा. सो यू कैन राइट इट नाउ. आई एम वेटिंग.
So guys, ready? So I think like it's the first property. Then of course, second, ये जो alloying है, it can be used to improve the appearance of metals as well. जिस तरह देखते होंगे आप stainless steel, let's say you also have the alloy rims, you can say, right? So alloying, it can be used to improve the appearance of metals. Third, I think alloys are more corrosion resistant than pure metals. And then alloying is used to lower the melting point of metals. तो ये बात है कॉमन सेंस, अगर आप मेटल मिक्स करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट होएगा ना, और इम्प्योरिटी लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट और टेक्सचर, और आई मीन यू नो आपका टेक्निकली एलॉय एक मिक्सचर है और मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है? तो सारी सी बात है, जिस मेटल में आप मिक्स कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट भी टेक्निकली लो कर रहे हैं. अगर मैं आपसे बात करता हूँ ब्रास की, ब्रास में कॉपर और जिंक है, तो जिंक के रिस्पेक्टिव कॉपर इम्प्योरिटी और कॉपर के रिस्पेक्टिव जिंक इम्प्योरिटी है. और इट मेक सेंस, दैट्स सो. यानी कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, कॉपर का भी लो हो जाएगा, तो इन बिटवीन वैल्यू आ जाएगी. Now, once you know these properties of alloys, right? Of course, let's see some examples of alloys. For example, it's brass. Now you should know that it's made of actually copper and zinc. Uses क्या? I think brass sonorous होता है, तो जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डोर नॉब्स हो गई, वैसे बाय द वे एटसेट्रा, बहुत कुछ होता है इसका. ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स, स्टैचूज होते हैं, एटसेट्रा. स्टील, इट्स आयरन एंड कार्बन. आई थिंक इसकी मशीनरी भी होती है, हैमर्स, I think engine, I think bridge bearings, I think window grills, etc. Then we also have stainless steel. It's again iron and carbon, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई है, आइदर क्रोमियम और निकल. द निकल और क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग. स्टेनलेस स्टील आपका लाइक कटलरी, राइट, यूटेंसिल्स, etc. Then we have, let's say, duralumin. It contains iron, aluminium, and little
मैग्नीशियम। जितने आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट बॉडीज इसकी बनी होती है। अब यहाँ पे एक बात करनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज लेट्स टॉक समथिंग अबाउट एल्यूमिनियम, फिर मैं आपसे बात करूँ ड्यूरेबिलिटी के बारे में। पहले अगर हम बात कर लें ज़रा एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम एक लाइट वेट सा मेटल है, इसकी डेंसिटी ज़रा लो होती है, लेकिन एक ऐसा मेटल है कि अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेता है, विच रेंडर्स एल्यूमिनियम अनरिएक्टिव। अगर ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, राइट। टेक्निकली इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनती है, और वो जो ऑक्साइड लेयर है वो बेसिकली एल्यूमिनियम को अनरिएक्टिव कर देती है। दिस ऑक्साइड लेयर इज Al2O3। तो एल्यूमिनियम ए में टार्निश कर जाता है, राइट। सो द ऑक्साइड लेयर renders aluminium unreactive। यहाँ पे देखें, एक मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, ऑल्दो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ऊपर है, isn't it? Aluminium should have been more reactive than zinc, but you know in reality zinc is more reactive than aluminium. Reason? Oxide layer। हाँ, आप ऑक्साइड लेयर रिमूव कर दें तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। यही यार, आप जब एल्यूमिनियम फॉइल में फूड रैप करते हैं, और लेट्स से कुछ लोग उसको ऑयल में फ्राई भी करते हैं, और करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी आपने ये तो नहीं देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्ट कर गया। हालांकि एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो अगर एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करता और हाइड्रोजन गैस देता तो वो तो फ्राइंग पैन ही फट जाता, राइट। तो मतलब एल्यूमिनियम स्टीम से नहीं रिएक्ट करती, तो वो क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर है। अगर हम ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर दें तो एल्यूमिनियम रिएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ऑक्साइड लेयर कैसे रिमूव हो सकती है? आई मीन हाउ कैन इट बी रिमूव्ड? Right? One, you can use sandpaper, and second, dip in any acid. I mean for a short while, वरना एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा। आप उसको एसिड में डिप करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा एसिड से, एल्यूमिनियम एक्सपोज हो जाएगा। सिंपल सी बात। इसे कहते हैं, अच्छा वैसे हम यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ करते हैं, जब हम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर रिमूव करते हैं, इट्स कॉल्ड एज एक्चुअली यू नो इट्स a pickling of metals, तो we can say it's pickling। यानी कि आपने अगर एसिड में डिप करके उसकी ऑक्साइड रिमूव की तो it's called as pickling। तो pickling of metal, तो आपने pickling कर दी है उसकी। Did you get it? अच्छा, इसके कॉन्ट्री अगर मैं बात करूँ ना आयरन की, तो आयरन के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर बनती है। आई मीन उसके ऊपर भी हैव ऑक्साइड लेयर, लेकिन उसकी जो ऑक्साइड लेयर है ना, विच इज Fe2O3। अब यहाँ तो इशू है ऑक्साइड लेयर्स में। अब जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर है, एक तो पहली बात वो स्टिकी है और नॉन पोरस है, यानी कि अंदर से एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम, लेकिन इन दिस केस इट्स नॉन स्टिकी। आप देखें, अगर किसी भी जंग लगाओ, आप उसमें हाथ लगाते हैं तो वो आपका हाथ लग जाता है। एंड सेकेंड, इट्स पोरस, यानी कि होता क्या है, वो एयर सीप इन करती रहती है, वाटर वेपर सीप इन करता रहता है, और अंदर से आयरन भी खराब हो जाता है। तो आयरन की ऑक्साइड लेयर में और एल्यूमिनियम में बड़ा फ़र्क है। यानी कि अगर एल्यूमिनियम में ऑक्साइड लेयर हो तो एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आयरन के ऊपर ऑक्साइड लेयर हो, आयरन फिर भी रिएक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ऑक्साइड लेयर इज पोरस एंड नॉन स्टिकी, इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली। यही प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की कि जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं इन द एयरक्राफ्ट बॉडी, इन द कार बॉडीज, ऊपर से लाइट वेट भी है। लेकिन ये तो नहीं हम बिल्कुल कर सकते कि गाड़ी पूरी एल्यूमिनियम की बना दें, हवाई जहाज पूरा एल्यूमिनियम बना दें, राइट। तो इसलिए बीच में आयरन डालते हैं ताकि ज़रा उसमें कुछ हल्की सी डेंसिटी भी आए, राइट। ऐसा तो ना हो कि मैंने गाड़ी चलाई, ज़रा स्पीड बढ़ाई और गाड़ी उड़ना शुरू हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए वी पुट आयरन इन इट। आयरन उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है, एटलीस्ट इट कैन बी यूज्ड इन कार। लेकिन वाई, या स्टिल द क्वेश्चन सस्टेन
कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम क्यों यूज़ किया, वाई एम जी। सो गाइज अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, जस्ट एक्चुअली कोटिंग इट, जब आगे पढ़ाऊँगा तो आई टेल यू एज वेल। सो बेसिकली मैग्नीशियम प्रोवाइड्स sacrificial protection to iron in this case as well. क्या मतलब है sacrificial protection का, तो you'll come to know soon what it means actually, right? So guys, we learned what are metals, their properties, and then some alloys, their properties and their compositions. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए जी, मेरे पास ब्रास है, ठीक है, ब्रास और ब्रास। नाउ ऑब्जर्व, अब मुझे पता है कि ब्रास की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज कॉपर एंड जिंक, ठीक। आपने तो सुना होगा कि ब्रास टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। वाई? क्योंकि दिस कॉपर बेसिकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो ब्रास में से कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जब वो कॉपर ऑक्साइड देता है तो इट्स ब्लैक सॉलिड, इसलिए ब्रास काला हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लैकनेस खत्म हो जाए, इसके ऊपर लेमन जूस ड्रॉप कर दें, एसिड होता है लेमन जूस, वो एसिड रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड से, अंदर से फिर कॉपर बाहर आ जाएगा। लाइक एल्यूमिनियम, अंदर एल रहता है, यहाँ कॉपर अंदर कॉपर ही रहता है। एज पर कॉमन सेंस अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने इस तरह किया कि मैंने जिंक और कॉपर, यानी कि ये ब्रास है, मैंने इसको डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक में डाल दें, तो मुझे पता है कि कॉपर तो रिएक्ट नहीं करेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। लेकिन जिंक रिएक्ट कर जाएगा, इजंट इट? वो दे देगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जितनी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैन आई से कि जितनी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो सारी ड्यू टू जिंक है। तो आई थिंक हाइड्रोजन गैस से आप जिंक की मान भी निकाल सकते हैं। और आई थिंक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर कॉपर, अगर आपने ये वाकई जानना हो कि मेरे पास अगर एक सर्टन सैंपल हो ब्रास का और मुझे जानना हो उसमें कितना कॉपर है, तो आई थिंक आप ब्रास को डाल दें डाइल्यूट एसिड में, तो कॉपर तो अंदर ऐसे ही रहेगा, कॉपर को फिल्टर ऑफ कर वे कर ले। इजंट इट? इट मेक्स सेंस। Okay. So guys, clear about alloys? So let's move on. Let's see rusting now. Now what is actually rusting, right? I mean, it's the reaction of iron with oxygen and water. And both oxygen and water need to be present, right? For iron to rust. And what is that rust? It is actually hydrated iron 3 oxide. यानी कि आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स या वाटर, एंड दैट गिव्स यू अ हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, राइट? XH2 कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। This hydrated iron 3 oxide is actually called as rust. It's brown because iron with charge +3 है, तो it's brown solid. So rusting के लिए I think you require water and oxygen both. अगर ऑक्सीजन और पानी दोनों है तो फिर जाके आयरन रस्ट करता है. If any one is absent, iron won't rust. And remember, rusting is a redox process, right? So it's actually a redox process. I hope it works. Okay, so there we go. So rusting is a redox process जिसमें I think iron जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है
आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और आज से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फिर आयरन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स हो गया. So rusting is redox process, right? Perfect redox. So by the way, many a times this rusting needs to be prevented, and for that some methods have been devised. लेकिन to learn those methods first, ज़रा पहले एक दो examples ले लेते हैं and let me ask some questions. Okay guys, I've written some test tubes. ठीक है, आपने मुझे बताना है. Please take 2 minutes sharp. Okay, in which test tubes does iron nail rust? I mean, or does not? Your time starts now. किस में iron nail rust करेगा, किस में नहीं करेगा? It tees are iron nails, ठीक है? Your time starts. GR1 thought. So I think that rusting कहाँ कहाँ नहीं होगी और कहाँ कहाँ होगी, तो फिर करें डिस्कस. चलो, there we go. So I think that rusting will happen in A because atmosphere में oxygen भी है, water vapors भी होते हैं. I think rusting will even happen in B because moist cotton, air तो है ही है atmosphere में. I think rusting will even happen in C. If some people are confused, boiled water does not contain oxygen, you're right, because oxygen is expelled when you heat water. Please, oxygen वो जो O2 molecules फंसे होते हैं पानी के molecule के दरमियान में, उस oxygen की बात कर रहा हूँ. H2O का अपना O नहीं, वो तो molecule की form में तो नहीं है. वो तो I mean it's a covalent compound, right? यानी कि for example मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ ना कि water में से oxygen बाहर निकल गई, इसका मतलब ये होता है. Let's say ये water molecules हैं, water molecules, water molecule, water molecule, ये सारे red ones are water molecules, ठीक है, water molecules. अब बीच में इसके oxygen molecules फंसे होते हैं, ये बीच में O2 molecules हैं, O2, जो जब मैं हीट करता हूँ तो ये O2 molecules बाहर निकल जाते हैं, इसलिए the boiled water does not have oxygen. ओके, चले. तो बेसिकली अगर बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो एटमॉस्फेयर तो खुला ही है ना, एटमॉस्फेयर तो ओपन ही है, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगी अंदर, तो स्टिल रस्टिंग हैपन्स. I'll say in D it still happens
बिकॉज डिस्टिल वाटर का मतलब ये थोड़ी है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है. डिस्टिल वाटर मीन्स में आयंस नहीं होते, राइट. सो आई थिंक दैट डिस्टिल वाटर हैज़ वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ. हाँ, माना कि ये जो ऑयल है ये ऊपर से ऑक्सीजन एंटर होने नहीं देगा, लेकिन उसके अपने तो ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल्स तो है. ई पे आ जाए. ई में स्टिल रस्टिंग हैपन्स. ठीक है. बाय द वे ई में और सी में फ़र्क क्या है? ओह, I don't know what's the difference. What was I thinking actually, right? So by the way, C and E are same. Let's cancel it. Now F पे आ जाएं. तो I think F में basically rusting occur नहीं करेगी. No. Reason, boiled water में O2 नहीं है, पहली बात. फिर दूसरी बात, ये जो यहाँ पे ऑयल की लेयर है ये अलाउ नहीं करेगी ऑक्सीजन को एंटर होना. ऑक्सीजन एंटर नहीं होगी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो आयरन रस्ट नहीं करेगा. So basically rusting के लिए both oxygen and water needs to be present. If they both are present, so of course rusting will happen. But that's so. So guys, how to prevent rusting? Let's see that. So guys, how to prevent rust? Either you paint the object, very fine. Either आप उस मेटल को ऑयल में डप कर दें, क्योंकि ऑयल में डप करेंगे तो उस पर ऑक्सीजन ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो मेटल सेव हो जाएगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, अभी हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर. एक मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट कर दें, जो स्टेनलेस स्टील होता है, राइट. स्टील की रस्ट लगता है क्योंकि स्टील में आयरन है, तो स्टील विल रस्ट बिकॉज इट हैज़ आयरन. लेकिन अगर मैं उसके ऊपर निकल या क्रोम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दूँगा फिर स्टील रस्ट नहीं करेगा. इसलिए तो हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं कटलरी के अंदर, बट वी कॉन्ट यूज स्टील इन कटलरी. द फोर्थ इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. अच्छा, इसका मतलब क्या है बाय द वे, व्हाट इट मीन्स? तो पहले मतलब देख लेते हैं एंड देन वी गो ऑन, राइट. तो व्हाट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन फर्स्ट? यानी कि अगर आप नाम पे गौर करें तो सैक्रिफाइस हो रहा है किसी चीज़ का. तो अ मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन विल सैक्रिफाइस इटसेल्फ, राइट, सो दैट आयरन डज नॉट रस्ट. पहले एक बात क्लियर कर लें, रस्टिंग क्या है? आयरन की ऑक्सीडेशन है, आयरन को ऑक्सीडाइज होना. अगर आयरन ऑक्सीडाइज कर जाता है तो आयरन रस्ट कर जाएगा. तो अगर मैं किसी मोर रिएक्टिव मेटल को आयरन से बॉन्ड कर दूं तो फिर मोर रिएक्टिव मेटल शुड ऑक्सीडाइज. हम अभी पढ़ के आए इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर. तो मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन हैज़ टू रिड्यूस. अगर आयरन रिड्यूस करेगा तो आयरन रस्ट नहीं करेगा. सो बेसिकली मोर रिएक्टिव मेटल is attached to iron, and among the more reactive metal we usually choose magnesium. आपने कभी देखी होगी शिप्स, अगर आपने मूवीज़ में देखा होगा शिप हल्स जो होते हैं, जो बेस होती है शिप की, हमने उससे अक्सर औकात मेटल पीस बांधा होता है. अब हम उसे लाइक सोडियम तो नहीं बांध सकते ना, आयरन सोडियम आयरन से ऊपर है, वो तो एक्सप्लोजन हो जाएगी. ऐसा मेटल जो आयरन से ऊपर हो और एटलीस्ट पानी से रिएक्ट ना करता हो, ठीक है. And usually we use Mg for that. Let's say for example, ये आयरन है, this is iron, और मैंने इससे अटैच कर दिया एक मैग्नीशियम का पीस. अब मुझे पता है कि मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, और आपको इलेक्ट्रोलिसिस से पता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स एक्चुअली टेंड टू ऑक्सीडाइज. जब Mg इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मीन ऑक्सीडाइज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आयरन को, तो आयरन तो रिड्यूस हो जाएगा. जब आयरन रिड्यूस करेगा तो आयरन रस्ट तो नहीं कर रहा, आयरन को रस्ट करने के लिए ऑक्सीडाइज होना पड़ता है. तो इस टाइम मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर रहा है और आयरन रिड्यूस कर रहा है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली कि मैग्नीशियम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है आयरन के लिए, राइट. सो इसलिए आयरन चूँकि रिड्यूस करेगा तो आयरन वोंट रस्ट, राइट. यही चीज़ वो अभी हम बात कर रहे थे ड्यूरेल्यूमिन वाले केस के अंदर, हमने वहाँ पे Mg क्यों डाला था कि Mg आयरन को रस्ट होने से बचा ले.
Mg आयरन को रिड्यूस करता रहेगा, राइट, आयरन रस्ट नहीं करेगा. दैट्स वाई वी यूज a little magnesium in these car bodies and aircraft bodies too. अच्छा, यहाँ पे I have a question. Okay guys, so we have two rods. एक रॉड है सिल्वर का, एक रॉड है जिंक का. मैंने इसके ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है, मैंने इसके ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है, राइट. हुआ क्या कि गलती से इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्क्रैच हो गई थोड़ी सी. लेट्स से इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ी सी स्क्रैच हो गई. जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ से थोड़ी सी स्क्रैच हुई और थोड़ी यहाँ से स्क्रैच हो गई, माई क्वेश्चन इज, आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वॉज स्क्रैच्ड, which metal bar will rust? Start thinking. Okay, so time is up. I think that this will rust. This won't. Because zinc is more reactive than silver, so zinc will tend to oxidize. और वही रस्टिंग है. यहाँ पे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, राइट. तो सिल्वर यहाँ पे अब जाहिर बात है जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, सिल्वर रिड्यूस करेगा, तो फिर सिल्वर तो ऑफकोर्स रस्ट नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे चूँकि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, सिल्वर रिड्यूस करेगा, तो ऑटोमेटिकली विल बी एक्सपेक्टेड दैट जिंक विल रस्ट इन दिस केस. इसलिए इट्स एक्चुअली बेटर टू इलेक्ट्रोप्लेट जिंक विद सिल्वर रादर silver with zinc. That's all. So guys, this was metals intro. We learned some alloys concept, we learned some rusting concept. I hope it's clear. Okay, so guys, this was happy learning.